Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, up till now we have gone through three of the applications of total internal reflection. In the last topic, first one was binoculars, the second one was regarding the periscope, and the third one was about mirage. Now we talk about the fourth application of total internal reflection. This is about fish eye view. What is the view that a fish takes when it is underneath water? This phenomena, let us start from the beginning. When light travels from one medium into another, its speed changes, which causes the light to refract. We talked about it last time when we discussed refraction, that refraction occurs because of bending of light rays and because the speed of light is reduced. So when light travels from one medium into another, एक medium पानी का है, दूसरा हवा का है. When the fish is underneath water, when light travels from one medium into another, its speed changes. उसकी speed तब्दील हो जाती है, which causes light to refract. जिसकी वजह से refraction का phenomena पेश आता है. What is refraction? Bending of light. As light travels from water to air, जैसे ही रोशनी जो है पानी से हवा में जाती है, as light travels from water to air, it bends away from normal. तो वो normal से परे हटते to the surface. Third, when light angle of incidence is greater than critical angle, ये आपने पढ़ा था जब angle of incidence जो है वो critical angle से बढ़ जाता है तो phenomena of total internal reflection की एक condition fulfill हो जाती है. When angle of incidence is greater than critical angle, all light is reflected back into water. तो पानी में वापस सारी की सारी रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो नक्कस हो जाती है. When the fish looks up, जब मछली ऊपर देखती है तो उसकी जब जो लाइट रेज बाहर निकल रही है, जो ऊपर देखती है, जो उसको नजर आता है, it sees a reflected view of the sides oblique bottom of the view of the pond, and directly above it sees a compressed view of outside world due to refraction. तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना की वजह से इसके डायरेक्टली अबव एक कंप्रेस्ड व्यू मिलता है, उस साइड के ऊपर जो उसको व्यू मिलता है वो रिफ्लेक्टेड व्यू होता है. दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल फिश आई व्यू. फिश आई व्यू का क्या अपना लिखना है? नंबर 1 ये लिखना है इसका कि डायरेक्टली अबव द फिश it sees a compressed view because of refraction, and on the sides it sees a reflected view of the sea and on the bottom of it. So this phenomena is known as the fish eye view. This is the fish and the rays of light are coming like this. So over here total internal reflection phenomena takes place, but here directly above the phenomena of refraction is taking place, and because of that the fish can see a compressed view and a reflecting view. The fifth application is about optical fibers. Now optical fibers is also one of the applications of total internal reflection, and you know that total internal reflection takes place when light goes from a denser medium to a lighter medium, and second condition is when the angle of incidence is such that is more than the critical angle of that medium. Critical angle for glass is 42 degrees. So total internal reflection makes light transmission over long distances possible in optical fiber. So total internal reflection का phenomena इस्तेमाल करके long distances के ऊपर जो है वो communication किया जा सकता है. Optical fibers are thin transparent glass fibers in which light travels due to TIR. Now what is an optical fiber? An optical fiber, optical वो जिसका ताल्लुक रोशनी से, और fiber मैंने रेशा. What is an optical fiber? They are thin ट्रांसपेरेंट ग्लास फाइबर्स, शीशे के बारीक बने हुए रेशे से होते हैं, शीशे के बने हुए, इन विच लाइट ट्रैवल, जिसमें रोशनी ट्रैवल करती है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एंड दीज फाइबर्स आर कॉमनली यूज्ड इन communication system, for example in TV, in telephone and computers. And fiber optics can carry large amount of data. Thousands of phone calls can be made by it. It carries very large amount of data because energy losses are not there, and the phenomenon of total internal reflection takes place. It has its uses in medicines and industry also. The uses of total internal reflection or fiber optics, optical fibers is also in medicines and industries. The endoscopy is one of the use of it.
Okay, now I will recapitulate this topic again for your convenience. Last time we considered the applications of total internal reflection, in which we discussed binoculars, we discussed the periscope, and we discussed what is mirage and how it takes place. Now is the fourth application, which is the fish eye view. What is a fish eye view? When the fish looks up, it sees a reflected view of the sides and bottoms. जब वो मछली ऊपर देखती है तो उसको रिफ्लेक्टेड व्यू मिलता है, एंड डायरेक्टली अबव, बिल्कुल उसके डायरेक्टली अबव जो है ना, उसको एक कंप्रेस्ड व्यू मिलता है. सो व्हाट इज अ फिश आई व्यू? व्हेन द फिश लुक्स अप, इट सीज ए रिफ्लेक्टेड व्यू of the sides and bottom of the sides or bottom of the pond की, or directly above it sees a compressed view. This is known as fish eye view. And how it happens when light travels from one medium into another, its speed changes. ये आपको इल्म है कि रोशनी जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना में डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट चेंज, ये दोनों चीज़ें बदल जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं. सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम, एक वसीले में से दूसरा वसीला, एक वसीला पानी है, दूसरा वसीला हवा है. व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर, इट्स स्पीड चेंजेस विच कॉजेज लाइट टू रिफ्रैक्ट, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है. एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर, जैसे ही जो रोशनी की जो बीम है वो पानी से हवा में जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल टू द सरफेस. नॉर्मल का मतलब है 90 का जाविया, तो सतह के ऊपर 90 के जाविये से दूर जाती है. व्हेन फिश लुक्स अप, जब मछली ऊपर देखती है, इट सीज अ रिफ्लेक्टेड व्यू ऑफ साइड्स एंड बॉटम. तो साइड्स और बॉटम उसको रिफ्लेक्टेड व्यू देता है, और लेकिन डायरेक्टली अबव इट सीज अ कंप्रेस्ड व्यू of the outside world due to the phenomena of refraction. And this is the diagram of fish eye view. This is air and this is water. The fish is here, the rays are coming from here, and from here this phenomenon is refraction, and this phenomena is the total internal reflection taking place. So दोनों फिनोमेना जिसमें हो रहे थे. Another application of total internal reflection is optical fibers. What are optical fibers? The optical fibers are thin transparent glass fibers. बहुत बारीक से ट्रांसपेरेंट में जिससे रोशनी गुजर सकती है, शीशे के बने हुए रेशे होते हैं, इन विच लाइट ट्रेवल्स ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें रोशनी जो है वो ट्रेवल करती है, गुजरती है, पास होती है एक सिरे से दूसरे सिरे, एक फिनोमेना के ज़रिए जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मेक्स लाइट ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस पॉसिबल. इसकी वजह से दूर ज़्यादा फासले पर हम रोशनी की ट्रांसमिशन कर सकते हैं. दीज फाइबर्स आर कॉमनली यूज्ड इन कम्युनिकेशन की में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन दरकार होती हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करते हैं. एंड दैट इज़ फॉर एग्जांपल इन टीवी, in telephone and computers. And fiber optics can carry large amount of data. Therefore, they are also used to carry thousands of phone calls. And it has its uses in medicine and industry also. So I hope that you will go through these applications as we are studying them and make notes of them and diagrams. And if you have difficulty, please call me. Thank you.